My dear students, I welcome you to this class. Today we shall discuss about all things bright and beautiful composed by C.F. Alexander. Last class we have already discussed about all about this topic or the prayer or eulogy or a hymn. Today we shall discuss about the main points or main questions from this text. Now look at the book, page number 3. Let's read and understand. तेणु समस्ते 3 पृष्ठ देखा 3 पृष्ठार आमर अनेक गुड़े प्रश्न रही एवं मुख्य मुख्य प्रश्न गुड़िकर उत्तर वर्तमान आम आलोचना करवा. तेणु प्रथम यू सी योर फर्स्ट क्वेश्चन इन द प्रीवियस क्लास. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू विगत क्लास रे मु तुमको कही अच्छे कि दिस पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कंपोज्ड बाय C.F. Alexander इज ए प्रेयर. मैंने कि फर्स्ट ए क्वेश्चन अराइजेस in our mind that why do we pray God? Why do we pray God? भगवान को आम कहीं प्रार्थना करते. whenever we fall in any problem, at that time we call the God. It is the general situation for each and every man. प्रत्येक मनीष देखिए जिते बड़े दुखरे पड़े से से भगवान को प्रार्थना करे. देखिए ओ गॉड प्लीज सेव अस, ओ गॉड प्लीज सेव अस, आई एम गोइंग टू रुइन. मो देखिए मोर सर्वनाश होगा जाऊँगी मु मरीजी मत रक्षा कर बोली भगवान को से डाके. किंतु इट इज नॉट जस्टिफिकेशन, किंतु यहाँ हूँ यथार्थता नुहे. व्हेदर वी फील हैप्पी और व्हेदर वी फील सैड, आमर दुख थाउ बा दुख सुख थाउ, एवरी टाइम ऑलवेज वी प्रे गॉड. भगवान को आम सब डाकिबा दरकार. बिकॉज गॉड इज द सुप्रीम क्रिएटर, गॉड इज द फादर एंड मदर ऑफ अस. भगवान होचंते आमर सृष्टिकर्ता, भगवान होचंते आमर पिता माता. तेणु सी होचंते सर्वविधाता. तेणु भगवान को आम समस्ते प्रार्थना करवा. प्रेयर मीन्स प्रेयर मीन्स ए सॉन्ग ऑफ प्रेज ऑफ गॉड. भगवान गुणगान करवा, भगवान प्रशंसा गान करने को प्रेयर बोली कहा जाए. एवं ये हूँ एक प्रेयर बा हिम स्तोत्र बा यूलोजी जनाण बोली ताको कहा जाए. तेणु देखिए गॉड हैज क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल यूनिवर्स और दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड एंड ही हैज प्लेस्ड ईच एंड एवरी आइटम ऑन दिस अर्थ इन ए प्रॉपर ऑर्डर. भगवान मध्य से सुंदर पृथ्वी को तैयारी करने सहित ए सुंदर पृथ्वी रे सुंदर सुंदर उपादान गुड़िक सज्जित आकार आमको रखिदे एवं आमर मनोरंजन पाई आमर उपभोग करने सब प्रकार व्यवस्था से करदे. आमको हाथ गोड़ मुह मुंड पाटी ये सब प्रदान करिसेंते. तेणु भगवान को निकटरे लगे आमे समस्ते ऋणी. वी आर इंडेप्टेड टू गॉड. आमे समस्ते भगवान के निकटरे ऋणी. तेणु भगवान को आमे भगवान गुणगान को आमे प्रशंसा करवा. बिकॉज गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनीसिएंट, गॉड इज ओमनीपोटेंट. भगवान होउछंती ईश्वर होउछंती सर्वज्ञ सर्वविद्यमान एवं सर्वशक्तिमान. तांको आउ केही ऊर्ध्वरे रही पारिबे नाही. तेणु भगवान जणे कि होउछंती ये गॉड इज ए सुपरनैचुरल पावर. ये हूँ अलौकिक शक्ति. वी कैन ओनली फील, नॉट वी कैनॉट सी गॉड. भगवान को हम देखिपर ना, केवल आम अनुभव कर. तेणु भगवान को उद्देश्य ये प्रार्थनाटी जनाटी C.F. Alexander रचना करिसेंते. तेणु गत क्लास रे आम आलोचना करथिले एवं वर्तमान आम लगे तार किछि क्वेश्चन आंसर करवा. तेणु लुक एट द बुक पेज 3 एंड सी द फर्स्ट क्वेश्चन. प्रथम क्वेश्चन को देखा. What does the poet think of all things? प्रथम क्वेश्चन. What does the poet think
of all things. Answer: the poet thinks the poet thinks that all things are bright, beautiful, wise, and wonderful. First question is, what does the poet think of all things? Our answer होचे the poet thinks that all things are bright, beautiful, wise, and wonderful. Wonderful. The poet thinks that all things are bright, beautiful, wise, and wonderful. Do you understand? Then come to the second question. Who has made all these things? Who has made all these things? ए समस्त उपादान ए समस्त द्रव्य किए तैयारी करिसंती? प्रेजेंट परफेक्ट रे हु हैज मेड ऑल दिस थिंग्स? ए समस्त उपादान ए समस्त वस्तु द्रव्य किए तैयारी करिसंती? किए निर्माण करिसंती? द क्वेश्चन, द आंसर इज God has made all these things. God has made all these things. Who has made all these things? यार उत्तर आसिला God has made all these things. Then look at your question number 6. How is the mountain? How is the mountain described in the poem? How is the mountain described in the poem? ए पद्य रे पर्वत को पर्वत संबंध रे कवयित्री कौन किपरि वर्णना करिसंते? How is the mountain described in the poem? यार उत्तर आछे in the poem. In the poem, the poet describes the purple headed mountain. Purple headed mountain. Purple headed mountain. How is the mountain described in the poem? यार उत्तर आछे in the poem the poet describes the purple headed mountain. Do you understand? Then next question का आसीबा. Why does it appear so?
why does it appear so? उत्तर आसला it appears so because the reflection of the rays of the rays of the sun, setting sun मतलब लिख पारिबा setting sun, rays of the setting sun, rays of the setting sun. या कहीं के भली देखा जाए why the mountain appears purple? Because the reflection of the rays of the setting sun. Then come to the next question. How does the sky look during the sunset? How does the sky look during the sunset? यार उत्तर आसছে the sky looks bright or glowing during the sunset. During the sunset. How does the sky look during the sunset? उत्तर आसছে the sky looks bright or glowing during the sunset. Then come to the next question. Which are the two seasons mentioned in the poem? ए पद्य क्यों दुईटी ऋतु कथा वर्णना कराई? ए पद्य ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल पद्य क्यों दुईटी ऋतु कथा वर्णना कराई? विंटर and summer. Winter and summer are the two seasons mentioned in the poem. Mentioned in the poem. Winter and summer are two seasons mentioned in the poem. Then come to the next question. Why does the poet consider the summer sun pleasant? कहीं कवि बा कवयित्री ग्रीष्मकालीन सूर्य को आनंददायक बोली वर्णना करिसेंते. Why does the poet consider the summer sun pleasant? The most important question. The poet considers the summer sun pleasant because
It is very mild or soft and warm. Why does the poet consider the summer sun pleasant? The poet considers the summer sun pleasant because it is very mild or soft and warm. Then come to the next question. How are the meadows useful for us? How are the meadows useful for us? How are the meadows useful for us? आम पाए meadows किपरि उपयोगी अटे उपादेयपूर्ण अटे. The meadows answer आसला the meadows are useful for us. Are useful. The meadows are useful for us because we play there. The meadows are useful for us because we play there. Then come to the next question. Where do the roses grow? Where do the roses grow? पदरे roses गोटे शब्द व्यवहार होइछे, that is the aquatic plants that grows in England. एवं ये हूँ एक जोटा कि जलज उद्भिद इंग्लैंड रे सृष्टि होता एक जलज उद्भिद एवं ये जलज उद्भिद गुड़िक केउठी कि देखा जाती वृद्धि हुंती. उत्तर आसिला द रसेस ग्रो बाय द water side of the river, ponds and seas. Then come to the next question. Why do people gather roses? Why do people gather roses? लोक माने ये रसेस को कहीं संग्रह करते. Why do people gather roses? यार उत्तर आसছে people gather roses to make baskets, mats or seats. Why do people gather roses? यार उत्तर आसছে people gather roses to make baskets, mats or seats.
सप मशीन तैयारी करने झुड़ी तैयारी करने लोक मैंने ये रसेस को संग्रह करती। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैज गॉड गिवन अस आइज? व्हाई हैज गॉड गिवन अस आइज? भगवान आमको कहीं दुईटी आखि प्रदान करिसंती? भगवान आमको कहीं दुईटी आखि प्रदान करिसंती? यार उत्तर आछे गॉड हैज गिवन अस आइज टू सी द beautiful creation created by him। भगवान आमको कहीं दुईटी आखि प्रदान करिसंते? व्हाई हैज गॉड गिवन अस आइज? यार उत्तर आछे गॉड हैज गिवन अस आइज टू सी द ब्यूटीफुल क्रिएशन क्रिएटेड बाय हिम। द मोस्ट important question। Then come to the next question, what should our lips tell? What should our lips tell? आमर ओठ बा पाटी कौन बखाणिबा दरकार, कौन बखाणिबा उचित, कौन प्रकाश करबा उचित? What should our lips tell? यार उत्तर आछे our lips should tell or describe the magnanimity of God। Our lips should tell or describe the magnanimity of God। भगवान कर ईश्वरंकर महानुभवता को प्रकाश करने पई आमे भगवान आमको पाटी देइछन्ते। Then come to the last question, how does the poet describe God? ए पद्य कवि बा कवयित्री भगवान को किपरि वर्णना करिसंते? हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब गॉड? यार उत्तर आछे द पोएट describes God as Almighty। As Almighty। How does the poet describe God? यार उत्तर आछे the poet describes God as Almighty। सर्वशक्तिमान ईश्वर बोली कवि बा कवयित्री वर्णना करिसंते। These are the important questions come from this poem or prayer, all things bright and beautiful। एवं मु भावुचे आमर ए क्वेश्चन टिक जदि आम समस्ते अभ्यास करिबा ताले निश्चित आमे ए विषय आमे अधिक किछि तथ्य संग्रह करि परिबा बा किछि लेखि जानि परिबा बा बुझि परिबा। तेणु समस्ते ए प्रश्नर उत्तर टिक लेखि अभ्यास करिबा एवं लेखि नुआ आशा नुआ भरोसा नहीं पुणी परवर्ती क्लास को आसवा। जदि विषय बा ये पद्य आउ कार किसी बुझार अच्छी नेक्स्ट क्लास रे आमे ताको आलोचना करिपरिबा। एवं समस्तंकर काइंड कोऑपरेशन पाई समस्त को धन्यवाद अर्पण करी आई डिक्लेयर द क्लास इज ओवर।